Oh, We are live. okay. Are we live, Sharwari? Yes, yes, we are. Okay, Hello, great. everyone. Good evening. I am Ruchira, and I welcome you all for our today's session. And today we have Megha and Kaankshi, two of our dear friends. Kaankshi is the founder of Negri Foundation, and Megha is co-founder of Defy Foundation. And today both of them are going to talk about democratic choice of education, and it will be an interactive session. So without wasting much of your time, over to you guys. Mm, can you enable my screen sharing, Sharwari, please? I need to share my screen. Done. Yeah, thank you. Can you all see the screen? Yes. Great. Over to you, Megha, first. I'll start after you do. All right. Hello, everybody. I hope it's been a good few days for all of you within Eduthon and all of that you are looking at and learning through the process. So today, what we were really going to be focusing on, and hopefully learn along with you as much as we talk about it, is what does democratic choice of curriculum really look like? What does it mean? What can it mean? What can you imagine about it? And a few ways that we thought of doing this really is to first look at everything that we know about curriculum per se and how curriculums are really created, especially in the context of India. So, if a lot of you who probably are under this theme of democracy, citizenship, and how do you put learner at the center of it, and how do you get people to become more active citizens through curriculum and all of that, it's probably very important to actually look at and understand the history of curriculum and what does curriculum and creation of curriculum and all of these things currently look at and currently focus on. So through the next 1 hour of engagement with you, we're probably going to try and help you think through what how does current curriculum making happen and what really is at the center of it, and probably leave you with some ideas, some resources also at the end by the end of this session, where you're able to also think about what can creative curriculum making look like, what can putting the learning at the center of this look like. So between Right. Kaankshi and I, we're hoping we're able to do that today and take you through particularly that. Kaankshi, go on. Yeah. Hi, thank you so much. Megha has already, given you a great gist about what we're going to do with you in 1 hour. It's going to be an interactive session. Some of you have met me before. So hi, I'm Kaankshi Agrawal. I run Netri Foundation. Netri Foundation is all about women in politics, but what we are doing at education is to look at how people who are learning should be at the center of it, and this is the focus of this session also. And as Megha also said, that we are going to try to learn from you, because you as a part of this eduthon are also coming up with innovative ideas and solutions. We would want to facilitate it, but also just like look into your own thinking process, and whether or not we have really thought about it in the past few decades as a country, whether like who do we put at the center of curriculum. This is a very interesting session according to us, because we are really looking forward to learn from you all. And so going on to our first slide, shall I move forward, Megha? So this is, as we said, it's an interactive session. It will depend on certain scenarios that we are going to give you. And this is our first exercise, actually. So most of you do know about the choice-based curriculum systems that are introduced in universities. One at the outset of it,
that is also a very apparent or a very choice. We don't really know what that choice really means, because choices are limited by the infrastructure, with the resources that are available, etc., etc. Right. So right now we want to look at that. Think of how curriculum is designed right from the school. And Megan, would you want to take them through like what we are going to do with the pyramid exercise, that we want them to draw a pyramid on their notebooks, and be as interactive as you can be, because you'll have to unmute yourself and share with us like how your pyramid looks. So all of you, also the participants, I would expect you to have your cameras and your, microphones unmuted when we ask you to speak. So be ready for that. Yeah. Yeah, absolutely. So what I was saying, like I was saying earlier, is that there is an understanding of how curriculum is built. There is, I'm assuming all of you have a stated understanding, an experienced understanding of how curriculums are really built out. One of the things that we're constantly told is that at least by the time you go into college, you start having a choice in what you want to learn and what you want to become with that particular learning, right? So if you go to an engineering college, for example, you have a plethora of choices of what you want to study. Same for medicine, same for law, all of that. So now all of us who are today participating in the session, through what we have seen through our own education or our understanding of how education works, we kind of have our own stated beliefs of how curriculum is created and how is curriculum designed, and which are the various actors. So what we've done for you here is we've listed down the actors that play a role in curriculum building. And these are teachers. These are obviously central agencies, because there is a play of the state as an actor in creating these curriculums. There is school administration involved. There are parents involved. Then there is, of course, the children and the learner. So what we would love for you to do is, if you have a pen and a paper next to you, and if you don't, you can get up, get it, and then what you can do is, really, if you can draw a pyramid, just a pyramid, and on that pyramid, if you can plot these 5 actors, for according to you on the pyramid, and we all know the pyramid theory is about at the top of the scale and at the bottom of the pyramid, right? So from the top to the bottom, where do these various actors lie for you? All right, and this is absolutely your understanding. We don't want you to overthink this. We don't want you to Google research right away. We're not expecting you to look at any curriculum right now. All I'm saying is that think about it. There is no correct answer, if I may add. Like, there is no correct answer that you can Google and find, like, this person is at the top of it, and this person is designing it, because it is for you to understand and for your own perception as to how your learning happened. For example, I'll just chip in and say that in engineering college, I was a student of engineering, and when this choice-based curriculum system came up, I think it was like in the middle of my 4th semester or something. And I was like, okay, what are the choices? Can I really go outright right here at this point and be like, I can pick up psychology? Can I go and see that if I can learn astrophysics in my college, or can I go and learn something about philosophy? Or it was choice-based curriculum systems between that. If I was a student who was only enrolled in electrical engineering, could go and choose some courses probably that I liked from mechanical engineering, or something like something to do with computer engineering, right? So the idea is that that's why I'm going to take a step back and say that it was only apparent that the choices were again limited by constraint. It was not very fluid. So right now we're thinking about the school system in a similar manner. Could you walk up to, like, when you were in 8th standard, could you walk up to some class and be like, hey, this is what I want to learn? I watched amazing Chinese movie, and I think I want to learn about Chinese philosophy. Could you really do that? So there is no correct answer. We want you to draw the pyramid as Megha was directing you to do it. Just like, by the time I think we've been rambling, you should have picked up your pen and already put yourself to the task. So in a minute we will open this conversation for you to share and tell us who really
lies at the top, and what is the priority order of these actors in the pyramid? तो आप लोग को अगर ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि आप जो स्कूल एजुकेशन है, जो स्कूल का करिकुलम बनता था, वो करिकुलम बनाने में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि करिकुलम बनाने में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है या करनी चाहिए। हमारे हिसाब से वो है टीचर्स, सीबीएसई, आईसीएसई जो कि बोर्ड सिस्टम्स हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स और बच्चे। हम आपको अगले 5 मिनट में आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं ताकि आप एक हायरार्की बना पाएं और एक पिरामिड बना पाएं जहां आप ये दिखा पाएं कि ये 5 एक्टर्स उस पिरामिड पे कहाँ खड़े होते हैं। क्या टीचर सबसे ऊपर है, क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर है, क्या स्टेट की आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड सबसे ऊपर है। तो वो हम चाहते हैं कि आप इस समय प्लॉट कर पाएं। लेट्स टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, आप वो कर पाएं और फिर चैट पे डाल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को हमें बताने के लिए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो 5 मिनट का टाइम और फिर वापस हम लोग डिस्कशन पे आएंगे। So Megha, there is one question for you from one of the participants कि यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं कि ये पिरामिड डिजाइन करना है तो वो लाइक व्हाट आर दे सपोज टू थिंक कि अभी करिकुलम अभी इस टाइम पे किस तरीके से उन्हें प्लेस किया गया है वो, या व्हाट इज सपोज टू बी डन वो? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं जो इस समय करंट सिनेरियो है, इस समय की एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है करिकुलम डिजाइनिंग में ये 5 एक्टर्स कहाँ रोल प्ले करते हैं? हाँ, ओके, आई होप दैट आंसर्स that person's question. Where can we look at the chat? I'm not able to look at the chat. I'm able to. Oh wow. Maybe because you're not sharing the screen. ठीक है. Okay. नहीं, आप नीचे चैट में देखो. I'm able to see Q&A. It's okay. It's okay. I'm not bothered. If you're able to look at it and you can answer them. There are few answers here. Yes. Okay. Yeah, I can see that. I'm just gonna सबको 1 मिनट का और टाइम देते हैं. Give everybody another minute, and in a minute then we will start scrolling through the chat. मैं encourage करूंगी सबको कि प्लीज आप अनम्यूट करके अपने ओपिनियंस पेश करें, क्योंकि अच्छा होगा हमारी आवाज के अलावा हम किसी और की आवाजें भी सुन पाए, तो that will be very helpful. So let's take 1 more minute. Can we invite people to now, like anybody who wants to volunteer and explain their pyramid and their observations? अगर कोई मतलब आप लोगों में से जो भी अनम्यूट करके एक-एक करके volunteer करना चाहते हैं वो
चैट में लिख दें. आई थिंक रुचिरा विल उनको अनम्यूट कर देंगी और फिर आप हमसे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं उसके बाद. Hi, I'm Liz. May I? Yeah, Liz. Okay, the pyramid structure that I drew was central agencies on top who designed the curriculum, which is taken up by the school administration, and then the teachers. Parents and children really don't play a role in, designing the curriculum. But one thought which came to my mind was when a central agency really designs a curriculum, they definitely take opinion from at least a group of teachers. So that's my understanding. Okay, interesting. Anyone else who wants to talk? Raja has an Raise your interesting hand. point. Raja has an interesting point. Yeah, Raja, can you please raise your hand so that I'll unmute you? Okay. Can you hear Manasvi is there. Hello, can you hear me? Yeah. Okay. I think all of them are equal determinants in curriculum. Why I include parents is where I will begin with, because they're the ultimate, they're the people who sign on the dotted line and on the check. So they pay. So they should have a right in what they pay for. Children, I am a bit doubtful here at the beginning, because a child of say less than 12 years, I don't know, I'm putting this as an arbitrary figure, would scarcely know exactly what life is all about. So whether the child can qualify to really read out their own subject and topic preferences at this stage of life is something which I always keep questioning, everybody and myself included. Central agencies, obviously, I consider the state as what to call as the facilitator of the environment, a peaceful, stable environment, and so they definitely do have some points to put in out there. Teachers, I have asked that they should be more of subject expert teachers, not just teachers, because not all teachers are really very good at their subjects. They're better teachers, of course, but they can't be qualified as experts in a subject, especially at the school level. So subject experts determine what really constitutes expertise in a particular topic, if at all we are aiming for expertise. What constitutes, say, general knowledge on the subject, what general knowledge is essential and not essential. So there must be some kind of an expert who determines these kinds of, determines the answers to these kind of questions. So together, when I look at all these things, I find that each has a very pivotal role to play in the determination of the curriculum. And which is why I thought that making it into some kind of a pyramid would be to kind of put it into a hierarchy, and where one. I just have one question, Raja, before we I think because we have got two conflicting points of view which we exactly were looking for. But I have a question regarding, you're saying that this should be the case, that everybody should have an equal role to play, or they are going to be equal I'm determinants? saying it is my opinion that this should be the case. But right now, what do you think it is? Right now, do you exactly? It is my opinion that they should have an equal role. Okay. I don't think they have an equal role at the moment. Okay, so if they don't have an equal role right now, Raja, where do you plot them right now? So in determination of 1, 2, 3, 4, 5, and we've given you 5 actors. The answer to that is very simple, that all state and all education institutes in the country have to follow the prescribed curriculum, a curriculum which is prescribed by the state. True. Okay. So you're placing. There is hardly anything to talk about anything below that. I might not agree with the curriculum, but that cannot be a part of the curriculum unless the state has agreed to it. Okay. Okay. Megha, would you like to expand on
these responses. Yeah, so we've got Yeah. some very interesting responses. And one thing that I absolutely see common to pretty much everybody's response is that you do not see children or learner at in the top three Mm, of the hierarchy. There is mm, one. I think everybody recognizes there is hierarchy mm. and how curriculum is defined, designed. And the second commonality that I think all of us have definitely identified and rightly identified is that the child or the learner has zero say in what is being defined for her life, by the way, Mm. right? So a curriculum pretty much, at least in the current education system, defines the choices that a young person is able to and unable to make in the future. And the determination of that is done without, forget their consent, without any consultation with them. That's another thing we've all identified common. The third commonality is that we also don't necessarily see a role of parents in the determination of what the child is being taught, what the child is will go through, right? What is it that the what the child will really walk through or will be able to do. So I think what we have found is that on the pyramid of education, on the pyramid of this huge industry that is education, we find that two set of demographies that get impacted the most, the child and the And the parent, parents. are the least involved, have the least voice, and have the least amount of any determination on what the curriculum should look like. So, uh, yeah, go ahead. And I would, yeah. So the interesting point here is that we all are now acknowledging that the central agencies or the boards and the state is a very predominant actor here. But at the same time, we also want to shed light. We did not include one of the actors here who actually, in our understanding, plays a very big role in the determination of curriculum via state is the private industry. It's the market forces, right? They are also playing a big they have a big influence on where your child goes to school, and choice for that matter is not determined by the child or by the parents, but as Raja actually mentioned a very interesting point, because the parents have to sign a on the dotted line, the check and everything, which means the choice right now is a function of privilege. It is a function of money. It is a function to choose between whether I want to and I have the capability to send my child to a private, private school versus a public school. Also, these private schools, they lure new parents into that, आपको हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल मिलेगा, बच्चे को आर्ट्स करने को मिलेगा, बच्चे को नए नए एक्टिविटीज में भाग लेने को मिलेगा, पर यू हैव अज्यूम्ड कि अब ये सब अगर आपको अपने बच्चे को देना है तो इट हैज टू बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट उनके बचपन के जो दौरान जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसमें करना पड़ेगा, राइट? तो आज हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज नॉट ओनली बीइंग डिटरमाइंड बाय द स्टेट, वो तो हो ही रहा है, पर एट द स्टेट सेम टाइम जब स्टेट ने प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऑप्शंस खोल दिए, स्टेट ने 2000 आई थिंक इट वाज नियर अराउंड 2000 दैट दिस काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन हैपेंड कि आपको जमीन अगर आपके पास है आप अपना स्कूल डाल सकते हो, आपको एक सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा उसको सो एंड सो करिकुलम के अंडर, बट नाउ इट इज अप टू यू कि आप जैसे भी चाहो आप एजुकेशन चला सकते हो. So we are also, with this pyramid, we are also trying to address the issue of penetrated privatization, which has started determining कि आपको कितनी चॉइस मिलेगी. जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो यूजुअली आपको ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. प्राइवेट स्कूल में आप भेजेंगे तो शायद आपका बच्चा एक अलग तरह की जॉब के लिए प्रिपेयर होगा, क्योंकि उसको इतनी चॉइस मिल रही है, उसको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, एंड यू कांट इमेजिन कि आपको वो एक्सपोजर आप पब्लिक स्कूल्स में दे पाओ. Would you like to take over on that point, Megha?
हाँ, सो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड एक चीज जो हम डिटरमिन कर चुके हैं वो ये है कि मार्केट फोर्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक करिकुलम डिजाइनिंग में। ना सिर्फ आपकी एजेंसीज, आपकी संस्थाएं, आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल हो रहता है, पर मोर इम्पोर्टेंटली एक बच्चे का और पेरेंट्स का रोल बिल्कुल नहीं होता है। और ये शायद इसलिए स्कोप इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत 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 फर्क है कि एक प्राइवेटाइज एजुकेशन सिस्टम और एक कंट्री जो प्राइवेटाइज एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रही है उसमें, और एक वेलफेयरिस्ट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ जो कंट्री ज्यादा तवज्जो देती है, इनके बीच में चाइल्ड के ऊपर, बच्चे के ऊपर, जो सीखने वाला है उसके ऊपर उसकी आवाज, उसको क्या चाहिए, वो कहाँ सुनाई देता है, इसमें फर्क है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आई थिंक आई मूव टू अ फ्यू एग्जांपल्स। शायद अब एक पहला तो ये सवाल है कि, और ये शायद राजा ने बोला है, जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हमें लगता है कि एक जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो एट द सेंटर ऑफ करिकुलम बिल्डिंग पे हो सकता है? और ये सवाल एक लेवल पे फिलोसॉफिकल भी है, एक लेवल पे पेडागोजिकल भी है, एक लेवल पे डायरेक्टली करिकुलम बिल्डिंग से रिलेटेड है, पर एक बहुत इनेट लेवल पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लर्निंग की उससे रिलेटेड है। तो शायद शायद चैट विंडो में एवरीबडी कैन टाइप कि क्या आपको लगता है कि इस समय बच्चे स्कूल, अगर हम प्री स्कूल को छोड़ते हैं तो इस समय बच्चा स्कूल 5 साल की उम्र से जाना शुरू कर देता है, विच इज द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो पहली बात तो ये, क्या हमें लगता है कि बच्चे सेंटर ऑफ करिकुलम बिल्डिंग पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? या हमें ये लगता है कि करिकुलम बिल्डिंग सिर्फ बड़े लोगों का काम है और इसमें सिर्फ बड़े लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को खुद पता ही नहीं होता है कि उन्होंने करना क्या है। तो ये थोड़ा एक हमें अंदाजा आ जाएगा कि आप में से कितने लोग चॉइस बेस्ड लर्निंग बच्चे के लेंस से देखते हैं, और आप में से कितने लोग चॉइस बेस्ड लर्निंग एटलीस्ट पेरेंट्स और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के लेंस से देखते हैं। तो दैट विल हेल्प अस आल्सो गिव यू सम एग्जांपल्स। सो चैट विंडो में अगर आप टाइप कर सकें कि शिल्पा says we can involve them with use of empathy, so which means शिल्पा agrees कि बच्चे करिकुलम बिल्डिंग के सेंटर पे हो सकते हैं। If we can have some more opinions on that, that will be very helpful for me to walk you through some examples कि क्या बच्चे इसके सेंटर पे हो सकते हैं। Child, okay. Yes, please go ahead, Dadich. Do you want to unmute and talk? Please, you can do that. Yeah. So, hello everyone. Hi. So nice question. And about, so this is the basic issue we all have been facing. Like, not we all have been talking about all educationists or all stakeholders. But when we say that, when we want the children or the learners to be at the center, okay, how are we taking that center itself to be? So like, when we say at the center, so are we thinking that उनसे हम पूछेंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है, and और या तो फिर we are thinking that we'll have a kind of an interactive and engaging survey kind of thing, but that is not actually asking questions, those domain specific questions, but general questions that make us understand their demand or their needs and their challenges. Okay, that is are we thinking, or we are just, and secondly, even after we take them as a center, even after we get their feedbacks or their needs or their wants or their aspirations of what they want, how do they things want, well, how are we ensuring that kind of, what you can say, accountability or even consideration or accommodation? So for example, every policy that introduces in India gives a 1 month, 2 month time to have the responses, to have any suggestions, any feedbacks. But
do we know how much they are included in it? How many suggestions came, and even if we know how many came, what are the inclusion? How has the ministry included it? So there is like we don't need just tokenism. You know what I'm trying to say. I get. So like how are we seeing children as the center? What is that center we are talking about? That is what my like doubt is. So I Perfect. Go But ahead. brilliant, brilliant. No, I before even answering him, there are other questions also coming in. For example, like rather than asking what they want to learn, we can right now say focus on how they want to learn. So now the pedagogy is also coming into into question here, and like what the participants are suggesting कि उनसे ये भले ही मत पूछो कि क्या पढ़ सकते हो क्योंकि इतनी choices बहुत अच्छा एक और सवाल पूछा गया कि but can we have really have infinite number of choices कि मतलब अनंत नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती है क्या स्कूल लेवल पे ये भी एक सवाल है एंड द पर्सन इज सेइंग कि हाँ हो सकती है शायद बट वो हमारे पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं बट मोर देन दैट वी आर ट्राइंग अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट आप लोग इस चीज को कैसे जैसे अभी दरीज के जो सवाल हैं ये बहुत ही सही सवाल है मुझे ऐसा लगता है बट आई विल ऑल्सो फोकस ऑन ये जो पेडागोजी का सवाल इसमें आ रहा है मिका कि सिर्फ करिकुलम नहीं इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है और टोकनिज्म ना हो ये हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी चीजें टोकनिज्म के नाम पर होती हैं इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि बच्चे को कैसे आप उस फ्लूइड एनवायरनमेंट में रखते हुए स्टिल उसकी अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ इंश्योर कर सकते हो सो आई थिंक there were examples. I will just quote one example. पहले के ज़माने में जब I think in 1950s and 60s there was a system that बच्चों को schools में भी ऐसे ट्रांसफर्स मिल जाते हैं ट्रांसफर इन द सेंस दैट अगर वो लोग उनकी लर्निंग एबिलिटी वो भले दूसरी कक्षा में है उनकी हो सकता है उम्र से 10 साल हो पर अगर उनकी लर्निंग एबिलिटी ज्यादा है सो दे वर प्रमोटेड टू सर्टेन क्लासेस राइट I think that was like right now that I think of it and when I was growing up तो मुझे ऐसा लगता था मुझे भी बड़ी क्लास में जाना है मैं स्मार्टली परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे कोई ये चॉइस ही नहीं दे रहा है कि मुझे बड़े बच्चों के साथ जाके पढ़ना है so now like just from a maybe it's not possible maybe it's possible we don't know why the rollback happened on that but I'm just saying that as a student or as a kid I also had those questions कि मैं बड़ी क्लास में क्यों नहीं जा सकती मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास के बच्चों से एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छी हूँ कुछ सब्जेक्ट में बहुत पीछे हूँ so I should have it I think this is one thing that I find as a solution that children be able to sit in different classrooms as and when according to their learning abilities. This is one of the things that comes to my mind over to Megha. So, Dadij and others on the chat, I don't think I have solutions for you on this session. So the idea of the Eduthon is if we can imagine solutions, right? मेरा काम है कि मैं क्या आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ ददीज आपके सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी कि सेंटर क्या है चाइल्ड एट द सेंटर लर्नर एट द सेंटर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है व्हाट इज द सेंटर right? I'll give you some examples of this from my experience in the education sector and having also experienced education in other countries. एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी इस सेशन में ये है कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक लेगेसी है एक टॉप डाउन लेगेसी है जो हिंदुस्तान को मिली है पर कुछ और देशों में बहुत ही आगे के लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में जो रीडिफाइन कर रहे हैं कि चाइल्ड एट द सेंटर का क्या मतलब है सो ददीज इंडिया के केस में चाइल्ड एट द सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंडिया के केस में अगर आप चाहे आरटीई उठा लीजिए आप चाहे आर्टिकल 21 के अंदर जिसके अंदर इक्वल राइट के अंदर आरटीई लाया गया था उसके अंदर उठा लीजिए चाहे आप कोई सीबीएसई का बोर्ड का करिकुलम उठा लीजिए आप किसी का भी प्रियम्बल पढ़ेंगे आप किसी का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि उसमें सेंटर उस पॉलिसी का सेंटर उस मुद्दे का बच्चा नहीं है लर्नर नहीं है या तो मार्केट है या लेबर मार्केट है या एक सिटीजन बनाना है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है राइट टू फ्री एजुकेशन में भी कहीं ये नहीं लिखा गया है कि
राइट टू फ्री एजुकेशन एक बच्चे के लेंस से दिया जा रहा है। राइट टू फ्री एजुकेशन में भी कहीं बच्चे को सेंटर नहीं बनाया गया है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में चाइल्ड इज नॉट एट द सेंटर फ्रॉम एनी लेंस, चाहे वो चॉइस के लेंस से हो, चाहे वो कैसे पढ़ाया जाए उसे उसकी लेंस से हो, चाहे वो इंटरैक्ट कैसे कर रहा है अपने सिस्टम के साथ उसकी लेंस से हो, तो वो कहीं पे भी सेंटर पे नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि कहाँ चाइल्ड एज ए सेंटर एक्सप्लोर किया गया है और वहाँ इसके क्या आउटकम्स दिख रहे हैं। सो एक एग्जांपल, और ये सारे जो रिसोर्सेज जिनकी मैं बात करूंगी वो ये पीपीटी में हैं जो अपने साथ शर्वरी और रुचिरा शेयर कर सकते हैं। उनमें सब में लिंक्स हैं ताकि आप उनको ऑनलाइन भी पढ़ सकें। सो चाइल्ड एट द सेंटर की एक बहुत इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट की गई है वो की गई है फिनलैंड में। फिनलैंड में 2018 में सरकार ने खड़े होके बोला कि इस समय जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है फिनलैंड में, जो कि हमारे तरीके का ही एजुकेशन सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया जाए। जिस तरीके से एजुकेशन पास ऑन की जा रही है बच्चों को स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, सेम एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है हिंदुस्तान में, वो बंद कर दिया जाए। एक ऑर्डर निकाला गया था सरकार के द्वारा और बोला गया था कि अब हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज किया जाएगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम अब चाइल्ड सेंटर बनाया जाएगा। और ये पूरे आई वुड से ऑलमोस्ट इन अ ग्लोबल सिनेरियो एक देश के लेवल पे सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट की गई थी एजुकेशन में। इस एक्सपेरिमेंट के दो फाउंडेशनल फिलॉसफीज हैं। एक ये कि हर बच्चा जान सकता है, पहचान सकता है कि उसके लिए क्या उम्दा है, क्या अच्छा है। दूसरा, कोई भी पॉलिसी, चाहे वो केयर टेकिंग पॉलिसी हो, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी बिना बच्चे के और बिना बच्चे की आवाज सुने नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या चाहिए। तो ये फिनलैंड में हुआ है। इसकी सबसे उम्दा शुरुआत की थी उनकी राजधानी ने, हेलसिंकी। तो हेलसिंकी शहर ने अपने लेवल पे एक 2-3 प्रोजेक्ट्स शुरू किए डिफरेंट एज ग्रुप पे, बाय द वे। तो वो सिर्फ एक हायर एज ग्रुप पे नहीं गए कि बच्चे बड़े हैं तो शायद उनकी समझ ज्यादा है तो शायद उनके साथ हम कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। उन्होंने इनफैक्ट प्री स्कूल ग्रुप भी बनाया। प्री स्कूल को एक ग्रुप बनाया गया, फिर मिडिल एज ग्रुप, फिर हायर एज ग्रुप, पर सब सिर्फ एज ग्रुप के हिसाब से बनाए गए। और उन्होंने लॉन्च किया जो कि जिसको कि वो कहते हैं, विच दे कॉल द नेशनल कोर करिकुलम। तो उनके नेशनल कोर करिकुलम के सेंटर पे was the child at the center of it, which said that, and the underlying value of it said that there is the rights of the child at the center of this, the intrinsic value of childhood, growth as a human being, equity, equality, diversity of families, healthy and sustainable way of living. तो अगर आप ये 4-5 वैल्यूज को ही पढ़ें और अगर उसको एक नजरिया दे तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत लर्निंग शिफ्ट हुआ है। एक शिफ्ट हुआ जहां वैल्यूज मूव्ड अवे फ्रॉम मार्केट फोर्सेस, लेबर रेडी, स्किल रेडी, रेडी फॉर द मार्केट चाइल्ड, टू सेइंग, moving it back to what childhood means, to what growth as a human being means, what do rights of the child mean, equity, equality, diversity जैसे शब्द यूज किए गए एक पहली बार at the center of what is known as a core education policy for a country. तो from an experiment perspective, from a reading resource perspective, I will say कि ये हो चुका है. So how did they make the center, the child as a center of this? 2 ways. पहली बात, child as a center बनाया गया from the perspective of high quality absorption of what they're learning. तो बेसिकली कि जो एनवायरनमेंट बनाया जाएगा बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो एनवायरनमेंट
को क्रिएट किया जाएगा विद चिल्ड्रन। ठीक है, तो कहीं पे भी ये डिसीजन मेकिंग यूनिलैटरली डिसअलाउ कर दी गई हर लेवल पे, चाहे और बाय द वे फिनलैंड में उस समय पे स्कूल बोर्ड्स अबॉलिश कर दिए गए थे, अबैंडन कर दिए गए थे। तो जो स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उन सब स्कूल्स को, उनमें जो टीचर्स थे उन टीचर्स को भी ये मैंडेट दे दिया गया था कि आप अपना रोल री इन्विजन करिए। आप दोबारा सोचिए कि अगर आप टीचर नहीं है इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आप क्या हैं। इसका मतलब कि ये जो बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी, ये सब चीजें जो एग्जिस्ट कर रही थी, इनके अंदर जो लोग आ रहे थे जो प्राइमरीली बच्चे थे, ये एनवायरमेंट्स रीबिल्ड किए गए उन बच्चों के साथ। बहुत क्लियर कट मैंडेट था कि हर स्कूल अपनी डेफिनेशन बना सकता है और व्हाट लर्निंग मीन्स, और ये डेफिनेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सो what is learning was determined with children। आखिर क्या सीखना है वो बच्चों के साथ बनाया जाएगा। दूसरा, कैसे सीखना है भी बच्चों के साथ ही बनाया जाएगा। फिनलैंड ने बहुत मेजर एम्फेसिस दिया enabling play and learning as central aspects। So play became a huge aspect and at the center of a child's growth। तो environment कैसा बनाया जाएगा, वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, राइट, ये भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाया जाएगा। और उसके अलावा ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा जब कोई प्रपोजल हायर लेवल पे जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत मैसिव लेवल पे की गई। और बाय द वे फिनलैंड अभी भी क्लेम करता है कि वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे ही है, दो साल होने के बावजूद। एवरी ईयर कुछ स्कूल साथ आते हैं और एक स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन वो क्या सीख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, राइट। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिनलैंड ने की वो की इंडिविजुअल प्लान फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो हर जो भी इनकी कोर पॉलिसी के अंदर स्कूल्स आ रहे थे, हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल प्लान बनाया गया। और ये दिस इज समथिंग आई हैव सीन। This is something I've seen when I visited a school, when I visited schools in Finland। अगर आप वहाँ एक स्कूल में जाते हैं और अगर एक नॉर्मल क्लास चल रही है तो वो हमारे क्लासरूम सेटअप में नहीं चलती है। वन, इट्स अ वेरी ओपन एरिया। दूसरा, हर क्लास के लिए 2 फैसिलिटेटर्स होते हैं और वो सिर्फ एक काम करते हैं जो है, अगर एक घंटे का सो कॉल्ड उन फैसिलिटेटर्स का क्लास है, वो बच्चे के साथ इंडिविजुअली बैठते हैं। उस बच्चे के साथ इंडिविजुअली बैठ के उसका पिछले हफ्ते का प्लान देखते हैं कि उसने क्या किया था, क्या करने की कोशिश की थी। और ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये एक होलिस्टिक लेवल पे बच्चे के साथ बातचीत की जा रही है कि उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं। तो वो बच्चा एक टीचर के साथ बैठ के अपना सिर्फ मैथ का करिकुलम टेस्ट नहीं कर रहा है। वो बच्चा बैठ के, उसने पिछले हफ्ते में शायद आर्ट्स से लेकर, मैथ से लेकर, इंग्लिश से लेकर, सिंगिंग से लेकर, डांसिंग से लेके, आउटडोर स्पोर्ट्स से लेके, किन किन चीजों में क्या क्या किया, वो वो चेक इन करता है। और फिर वो बच्चा डिसाइड करता है कि वो अगले आने वाले हफ्ते में क्या करना चाहता है, राइट। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि की जा रही हैं, जहां सबसे बड़ी बात जो एक्नॉलेज की गई है वो ये है कि एक 5 साल का बच्चा भी कैपेसिटेटेड है, केपेबल है सोचने के लिए कि वो क्या करना चाहता है। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो देश इस बच्चे को कल की पर्सपेक्टिव में एक लेबर फोर्स, एक स्किल रेडी, मार्केट रेडी इंडिविजुअल की तरह नहीं देखता है। वो इस बच्चे को इस समय एज अ कॉम्पिटेंट एड ऑन टू अ गुड सोसाइटी देखता है। एक another example I can give on this is very critical and I think is very interesting। जबकि सीरियन रेफ्यूजीज के एक्सोडस शुरू हुआ था और काफी देशों ने रेफ्यूजीज ऑब्वियसली एक्सेप्ट किए थे, और फिनलैंड एक देश था जिसने क्लोज टू अबाउट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए अपने देश में। पर ये रेफ्यूजीज जब इनको सेटल इन किया गया
फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी, फिनलैंड की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सबसे पहला रूल निकाला था कि इन सब बच्चों को जो इस समय हमारे देश में आए हैं, इन सब बच्चों को एक्सेस दिया जाएगा जो करंट सिस्टम है हमारा लर्निंग का. Immediately, there was a change in the way teachers started talking about diversity, equality, equity in classroom. So, वहाँ 6 साल के बच्चे भी सीखते हैं कि refugees क्या होते हैं, कि displacement क्या होता है, right? और ये क्यों होता है? So, there was a huge focus on how do you assimilate refugee children within the education system. Yeah, Right. I think these are brilliant points, and the way you emphasize, Megha, on the fact that the acknowledgement, हमने इस बात को पहचाना, इस बात को समझा और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि एक 5 साल के बच्चे का एक मेंटल स्तर होता है, उसकी इच्छाएं होती है, उसकी आकांक्षाएं होती है, उसको समझ भी होती है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या चाहिए, राइट? एक हमारे लाइक एंड कमिंग बैक टू, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हम बहुत ही एजिस्ट सोसाइटी में है, मतलब जहाँ पे अगर आप छोटे हैं तो आपको कुछ नियम आदेश का पालन करना है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप छोटे हैं, और कि आपको मतलब घर के बड़ों का जस्ट इसलिए सम्मान करना, नॉट बिकॉज सामने वाला रिस्पेक्टेबल है, पर इसलिए क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़ा है. पॉलिटिक्स में अक्सर ये बात की जाती है कि यंग हो, अभी तो बहुत टाइम है, यंग हो, एक्सपीरियंस नहीं है, यंग हो, तुमको मालूम नहीं है कि तुमको क्या चाहिए और तुम कैसे देश को चला सकते हो या कॉन्स्टिट्यूएंसी को चला सकते हो. तो ये जो एजेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक द एग्जांपल्स दैट यू शेयर्ड, and I'm sure that the cohort was benefiting a lot from that. In fact, I got to learn so much from you in this moment. But the idea is that अब इसको तो सबसे बड़ा इंडिया में फॉर एग्जांपल इसको लेके क्या चैलेंज हो सकता है कि इस तरह का इंडिविजुअल फोकस इज मतलब जो करना फिनलैंड में पॉसिबल हुआ, वो शायद हिंदुस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ आर आबादी, ये जो सबसे बड़ा एक इसको दे दिया जाता है ना, इट्स अ कंस्ट्रेन मैकेनिज्म, कि आप हर चीज के लिए पीछे बोलते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आप कैसे इस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करोगे कि क्लासेस से 2 फैसिलिटेटर हों और वो एक एक बच्चे पे ध्यान दे, आप टीचर्स की उन एंजाइटीज को कैसे डील करोगे जो टीचर्स बोलती हैं कि हमें कुछ कुछ करिकुलम तो फिनिश करना ही है, पर उसके बाद बच्चों के पर्सनल ग्रोथ पे भी बात करनी है. सो डू यू लाइक राइट नाउ ये एजुकेटर्स एंड योरसेल्फ एंड आई आर सपोज टू थिंक कि क्या ये इंडिया में पॉसिबल है दैट हम एक एजुकेशन सिस्टम को स्क्रेप करके कंप्लीटली, जैसे कि फिनलैंड ने जो ड्रास्टिक मूव लिया, क्या हम वो कर सकते हैं, या फिनलैंड उस स्टेज पे कब पहुंचा जब वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी को स्क्रेप कर पाया? क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखेंगे कोविड की वजह से तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है, and हम चाहें या ना चाहें इंडिया में हमारी एजुकेशन को ऐसे ही देखा जाता है, यू हैव टू स्टडी सो दैट यू कैन अर्न, है ना? आप अगर पढ़ेंगे नहीं, आपके पास डिग्री नहीं होगी, तो आप आगे जाके आप कैसे कमाई करेंगे? और कमाई करना इज वेरी, अगेन लाइक अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी हैव सो मेनी पीपल हु आर अंडर बीपीएल, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इलिटरेट अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी मैकेनिज्म. तो अगर हम ये देखते हैं कि फिनलैंड के लाइफ स्पैन में एज अ कंट्री वो पॉइंट कब आया व्हेन इट डिसाइडेड टू स्क्रेप दैट पॉलिसी, दैट इज वन क्वेश्चन. एंड सेकंड, जब ये करा उसके बाद अभी दे आर स्टिल सेइंग दैट दे आर इन द एक्सपेरिमेंट फेज, बट देन how do you really make sure that economy, which is going through a very downtrodden times right now, how do you still ensure that people feel employed? Because then it is not only scraping the education system, then it is also scraping the hiring mechanisms in the country. हम कल ही जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात किया कि कैसे ड्रॉप आउट, अगर आप हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं तो आपकी वाहवाही है, आपका रोमांटिसाइजेशन है, और आपने बहुत अच्छा कर दिया कि आपने जाके हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया, या आपने एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके ड्रॉप आउट किया. पर अगर आप 10वीं 12वीं ड्रॉप आउट हैं तो देयर इज नो रोमांटिसाइजेशन. जब आपको जॉब मिलती है, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आपकी डिग्री कहाँ से कंप्लीट हुई है, आपके कितने मार्क्स थे, और एटलीस्ट आपके पास डिग्री है कि नहीं, क्या आप एक कागज दिखा सकते हैं? तो आई डोंट, Malab, for me, it doesn't stop at only scraping the education system. I know we were talking about child at the center of learning, and that's why you brought in that, example. And I totally concur with it. But I'm just playing the devil's advocate here. कि हम market forces को जिनको हम feed कर रहे हैं, how as a society we can be so sustainable that we don't need that, कागज का पत्री anymore. We don't need to have a degree in our hands. So I also think that
इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन जहाँ पे हम फिनलैंड वाली स्टेट तक पहुंचे, और जो भी यहाँ पे लोग हैं जो भी इस चीज को स्टडी करेंगे आगे जाके, whenever you are going to look at these documents, you should also like look at कि फिनलैंड की वो क्या स्थिति थी जब उन्हें जाकर बोला, वो एज अ सोसाइटी क्या थे, उनकी डेमोग्राफी क्या थी, उनका क्या सोसाइटी में ज्यादा यंगस्टर्स हैं कि ज्यादा बच्चे हैं कि ज्यादा बुढ़े लोग हैं. That also plays a lot of difference, right? We treat youngsters as a labor force right now, कि but मतलब जो youngsters है हम उनको ऐसा देखते हैं कि ये जो है ये लेबर फोर्स है, ये कल का भविष्य है, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपैंड करेंगे. हम उन सबको ह्यूमंस की तरह नहीं देखते हैं. वी जस्ट लुक एट देम एज द ends towards the, you know, a means towards an end, not as the end themselves. तो ये सारी जो चीजें हैं, I think these are larger questions to think about, but that was my 2 bits on this. But can we move on to the next um, Kaankshi, I think Satyam wants to say something. He's continuously raising his hand. Satyam, Okay, you okay. can unmute yourself and talk. Sure. गुड इवनिंग मैम. हाँ जी, hi. हेलो Yes. मैम. अभी तक मैं जो सुना हूँ अभी तक मैम, मैं बात मैम का, तो उसमें मैम मुझे 2 चीज समझ में आया है. पहले तो ये कि इंडिया में जो है ये सेंट्रल एजेंसीज और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैरिकुलम का है, ये लोग डिजाइन करते हैं, तो बच्चे उसके हिसाब से अपना कैरिकुलम करते हैं. ठीक है मैम. इस तरह का मैं सुना हूँ अभी तो. और जैसा कि मैम ने अभी कहा कि दूसरे कंट्री में वहां पे उन्होंने बनाया है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने हिसाब से एजुकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं. सही कह रहा हूँ मैम? जी. हाँ, तो मैम मेरा एक आइडिया था, आप लोग को मैम एक आइडिया समझिएगा. जैसे मैं कह रहा हूँ, भले पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूँ मैम, सोचने की कोशिश करिएगा. गलती होगा तो माफ करिएगा मैम. ठीक है. हेलो मैम, ये कह रहा हूँ मैं कि हम लोग सभी लोग कैरिकुलम पे बात कर रहे हैं, मतलब कैरिकुलम पे सभी लोग, मतलब उसके लिए हम लोग सब लोग एकाग्र हैं और उस पर काम करना चाहते हैं. तो क्यों ना हम लोग, मैम एक मूवी आप देखे होंगे, फालतू करके आया था मूवी, उसमें ये था कि जो स्टूडेंट फेल हो जाते थे उनके लिए उसने एक कॉलेज खोला था जिसमें उन लोग को पढ़ा करके डिग्री दिलाता था नौकरी के लिए. तो उस तरह से मैं एक आइडिया था कि जैसे कि आपने बोला मैम कि उस कंट्री में जो है टीचर्स के सजेशन के हिसाब से कस्टमाइज करके एजुकेशन को किया जा रहा है. तो हम लोग इस नेक्स्ट एडथॉन से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, इसमें एजुकेशन को चेंज करना है. तो मैम जो ये जितने लोग कैरिकुलम से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू या जितने भी कंपनियां हैं इस पे बात करके कुछ प्लान बना के हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि या तो एक बिल्डिंग कर ले या एक रूम ले लें जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशली, जैसा कि वहाँ पे हुआ है, स्टूडेंट्स के माइंडसेट से कस्टमाइज करके स्टडी कराया जा रहा है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, चेंज नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम लोग उस तरह का एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कस्टमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे अगर उसमें कुछ ग्रोथ होता है कि हाँ वहाँ सरकार ने स्टूडेंट की बात को सुनकर कस्टमाइज किया एजुकेशन सिस्टम को, हम लोग अगर इस तरह का एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसमें रियलिटी होता है, ऐसा करने पे भविष्य बन रहा है, तो हम लोग बाद में उसको गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि ऐसा ही करते हैं हम लोग और ऐसा प्रोसेस हो रहा है. तो इसमें मैम ये था कि हम लोग जितनी भी कंपनियां कोलैबोरेट करके हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहते मैम कि हम लोग जैसे कि जितनी भी कंपनियां हैं, हम लोग जो स्टूडेंट उसमें पढ़ेंगे उनके भविष्य के लिए एक पॉलिसी हम लोग कर देंगे कि जो अभी पढ़ेंगे इस मतलब हम लोग के जो बनाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, उस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका फ्यूचर हम लोग पहले से डिसाइड कर ले रहे हैं कि उनको अगर जो कुछ भी किसी भी लायक नहीं बन पाए तो उन्हें हम एक जॉब जरूर दे देंगे अपनी कंपनी से, फिक्स जॉब रहेगा, जैसे कि उनको बाद में ये नहीं है कि चल के जॉब मिलना ही मिलना है. लेकिन हम लोग अभी ये जो प्रैक्टिकल करेंगे इसमें हम लोग ये कर देंगे कि हाँ जो बच्चे उस समय इस प्रैक्टिकल के दौरान पढ़ेंगे, 2 रहेंगे या 3 रहेंगे या 4 रहेंगे, उनको हम नौकरी इतने तक का फिक्स दे देंगे. जब बहुत सारी कंपनियां मिलकर इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक तरह का मैं प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ. श्योर सत्यम, थैंक यू, आपने ये बात उठाई. ये आपका एक पायलट हो सकता है और इसके बारे में हम एक पर्सनल मेंटरिंग सेशन में भी बात कर सकते हैं. राइट नाउ जो हम जिस मतलब आपका आइडिया है और हम डेफिनेटली इसको दोबारा से सुन सकते हैं. थैंक यू, आपने अभी भी शेयर किया.
क्योंकि आप Thank कुछ you, ma'am. करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और इसीलिए आप शायद एडिथॉन में आए भी हैं कि आप कुछ नया ट्राई करें। पर एट द सेम टाइम हम फिर से इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि शायद जो आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका एक मकसद एक पर्टिकुलर रिजल्ट को पाना नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इस करिकुलम डिजाइनिंग का जो हम सेंटर में जिसकी बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट हो या बच्चे हों, हम ये बोल रहे हैं उसका कोई एक ऐसा मकसद जो सोसाइटी अप्रूव करती है कि आपके पास नौकरी होनी चाहिए, आपके पास वाइट कॉलर इज्जत शान और शौकत होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई करके, या आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ये इस सेशन का ये मकसद नहीं है। पर आपने जो डेफिनेटली जो सोल्यूशन दिया हम उस पर अलग से बात कर सकते हैं। पर इधर पे हम बार बार इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं दैट यस इट्स अ टफ रोड। शायद फिनलैंड जैसा मॉडल हम ओवरनाइट यहाँ पे नहीं कर सकते, बट देन हाउ कैन वी start at least conversations around this। हम कैसे अपनी अपनी लिमिटेड एबिलिटीज में या आप जो नए प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं उनके साथ हाउ कैन यू थिंक अबाउट ब्रिंगिंग दिस थॉट कि चिल्ड्रन शुड बी एट द सेंटर। और यही वाली बात कि 12 साल का बच्चा सोच सकता है कि 15 साल का सोच सकता है कि 10 साल का कि 5 साल का, ये भी एक प्रोसेस है जो आप खुद मतलब जिसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं कि कितने साल का बच्चा अपने लिए चॉइसेस लेने के काबिल है कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ। और मेरे लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें है मेघा एंड दैट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक यंग शेल्डन एक सीरीज है जो अमेजन प्राइम पे है। आई रियली मुझे वो बच्चा बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स वो बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट बच्चा। सॉरी Same here, I said. yes so that kid is like बहुत ही शार्प बच्चा है। मुझे मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको बहुत ही एजुकेशन पर्सपेक्टिव से ही देखती हूँ उस सीरीज को। और मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चा आज वो डिसाइड करता है आज मैं वायलिन पढ़ूंगा बिकॉज यू नो वायलिन हेल्प्ड Einstein in his equations that he was writing in his mathematics। तो मैं भी वायलिन सीखूंगा। और वो जाके स्कूल में एक वायलिन टीचर के पास चला जाता है, बोलते मुझे वायलिन सीखना है। तो like we find it very awkward, we find it really super bizarre कि आप ऐसे ही किसी दिन स्कूल में एक रूम में चले गए और बोले आज मुझे वायलिन सीखना है, टीचर भी आपको एंटरटेन कर रही है, अपना पुराना वायलिन दे रही है, आपने 10 दिन प्रैक्टिस कर ली। all so just like look at these the series and you can understand how this child is extremely catered to। मतलब हर किसी का उस पर सिर्फ ये फोकस है कि शेल्डन को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट? तो I think that is something that I take away from there. But let's move on to the second scenario. Megha, I'll pass the mic over to you. Kaankshi, I think you should start with this because this Okay. has the teachers training aspect to it which you're more familiar with, right? Sure. So here is what we're talking about in the sense that we have produced this excerpt from one of the policy documents. हम चाहते हैं कि आप इसको सिर्फ अभी पढ़ें। ये आपकी स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप 5 मिनट लेके इसको पढ़ें और इसके बाद हमारे पास आपके लिए सवाल हैं जैसे कि पिछले सेशन में भी थे, मतलब पिछले सिनेरियो में भी थे। तो प्लीज टेक 5 minutes and just read this. मैम जब तक सब लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सत्यम आप भी इसको पढ़िए। हम डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में खोलेंगे, बट राइट नाउ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इसको पढ़िए और उतने इन्वॉल्व रहिए। थैंक यू।
let me know in the chat box when at least 5, 7 of you have read it. So we can. Okay. Okay, a couple of more people and then we can move on to the next part. तो ये ओरिजिनल मतलब अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के ड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, हमने उसमें से ये एक एक्सर्प्ट निकाला है। तो ये एक पॉलिसी पीस है ना? आपने पढ़ लिया? 4 लोगों ने 4-5 लोगों ने पढ़ लिया। ओके, बाकी 1-2 लोग और। तो we are asking you to read this because then there are questions again based on this. ठीक है, क्या हम 1 मिनट का समय और देंगे ताकि सब लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ पाए। ओके, लोगों का मैसेज आ गया। हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, है ना? इसके रिलेटेड जो हमारे सवाल हैं, लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो आपने वो पढ़ा, अब आपको ये बताना है जैसे हमने पिछले उसमें किया था, अब आपको फिर से बताना है जब आपने उसको पढ़ा उसमें आपको पढ़ के क्या लगा कि किसके हित के बारे में बात हो रही है या सबका एजेंडा होता है। देखिए कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क इस देश में बनता है, हमने एक सेशन भी किया था उस पे दैट यू नो हाउ व्हाट इज द पॉलिटिक्स एंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग काइंड ऑफ अ सेशन, कि जब पॉलिसी बनती है एंड मतलब आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस समटाइम्स दैट यू नो व्हेन अ पॉलिसी इज लेड आउट, जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम ये नई पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो एक ड्राफ्ट निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि कंसल्टेशन करेंगे इस ड्राफ्ट के ऊपर, उस पर सबके आवाजें मांगते हैं, टीचर्स की, सिविल सोसाइटी की, कंसल्टेंसीज, but again children are not at the at the center of that, think tanks, consultants, school administration, टीचर्स के यूनियंस होते हैं, दे ऑल्सो मेक अ रिप्रेजेंटेशन। सबका एजेंडा कुछ ना कुछ होता है हर पॉलिसी के अंदर, पर आपको क्या लगता है कि किसका एजेंडा अगेन इन द प्रीवियस एक्सर्प्ट प्राइमरी था? यू कैन पुट इट इन अगेन इन अ पिरामिड फॉर्मेट। प्राइमरी जिसका आपको लगता है सबसे टॉप पे एजेंडा जिसका सर्व हो रहा था उस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट से, कि अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि टीचर्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये टीचर्स का एजेंडा फुलफिल करने की बात हो रही है, या ये अगेन सेंट्रल एजेंसीज के एजेंडा फुलफिल करने की बात हो रही है, या ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स की ट्रेनिंग से बेनिफिट करेगा, या एक्चुअली बच्चे और पेरेंट्स बेनिफिट करेंगे, या ये थिंक टैंक्स और कंसल्टेंट्स के दिमाग में ये आइडियाज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे you know institutes ऐसे भी होते हैं, they are armchair critiques and there is no problem in being that, it's just that they feel from a policy perspective certain things are right. It could be based on a lot of reading and theory, it could also be based on some ground experiences. So that is the question कि whose agenda, किसका agenda इस draft में आपको primary दिख रहा था? Integrated programs of teacher preparation for all levels of education. तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगी, इंक्लूडिंग ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज एज वेल एज मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस must aim to establish all these things. Who is at the center of benefiting from it, or whose agenda is primary is the question here. So you can start putting in your answers in the chat box.
Okay. So we will ask a couple of you to just unmute yourselves and like just tell why you answered what you answered, because we are also running short of time now. तो श्रेया आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे, और मानसी, लिज, या श्रेया, Yeah, go ahead. hi. So I think the school administration is in the center of these policies only because I feel like it's a kind of an approach that they can then sell to the parents, stating that our teachers are that equipped to, in order to like, teach your kids. Like it's this holistic view that they want to sell to the parents, and then it becomes like an entire business sort of an agenda that they can pull. And then of course there's the central agency because that is what backs this entire school administration system anyway. And then finally the teachers, because it's not like they're not benefiting from it at all, but it's really not what, I don't know, maybe they would want it, maybe they would not want it. It's sort of like a gray area there. Okay, good point. Interesting. Manasvi, you want to unmute yourself and talk? Yeah, sure. Thank you so much. So am I audible? Yeah. So I think that central agencies and think tanks and consultants are the major primary, the what do we say, organizations who actually determine that what kind of trainings the teachers would undergo, and all of this is not for the children. It is more of by just fulfilling their own agendas and not actually thinking about the children as to how the teachers could be or their skills could be improved to you know uh, disseminate the information that they have in a proper way. That is what I think. Okay. There's another follow-up question to anybody who's gonna, unmute themselves next. Is it Rishikesh or Liz? I think Liz has also responded. तो ऋषिकेश या लिज, जो भी अपने आप को अनम्यूट करके, मेरा एक और सवाल है. जब हमने अभी ये प्राइमरी एजेंडा की बात की, एंड क्योंकि मैं सिमिलर आंसर्स देख रही हूँ, अगेन दैट चिल्ड्रन आर एट द बॉटम ऑफ इट, central agencies, probably think tanks, and teachers are at the top of it, or school administration is. तो आप क्या सोचते हैं इनका एजेंडा क्या होता होगा? मतलब एक थिंक टैंक का या एक कंसल्टेंसी का जो गवर्नमेंट को बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए पॉलिसी को लेके, टीचर्स को लेके, इनके क्या एजेंडा? लाइक it's a random guess that you can make, or probably based on your observation and reading. So go ahead. Rishikesh, are you gonna unmute yourself? Liz? Achha, Rishikesh, yeah. I really don't know if I know the answer, but Okay. I can. I mean, ideally, their role is to design the education in the most ideal way, and I mean Okay. the It's objective. okay. I'm and not the putting you on a learning spot. So. outcomes. Yeah. I'm not putting you on a spot. So, Liz, do you want to take a shot at this? Primary. Again, a guesswork, but I assume think tanks and consultants have probably taken an idea of what the industry wants, and they are trying to advise the boards that, okay, this is probably the solution to the problem of unemployment or issues like that. Okay. So I assume these are the only two players. Rest of them don't come into the picture at all, rest of the actors. Interesting. Very interesting. So here's like some data, again, that the NEP itself also acknowledges. तो teacher training, अब ये सवाल आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि over the time education policy या education reforms बहुत ज़्यादा इस बारे में बन गए हैं कि टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग. Again, just to share a personal story that my mother comes from that, field, and she is a teacher. And it's like headache है, मतलब टीचर्स को खुद नहीं मालूम है वो ये सब करने क्यों जा रहे हैं. At the end of the day, there are like, people who are just lecturing them at the end of the day, and, they are coming back, sometimes partially satisfied, sometimes it's just a formality that they have to get so that they can get their rightful promotions, or they can get their rightful क्या बोलते हैं, उनको कुछ जो भी उनकी formalities होती हैं वो पास करने के लिए उनको चाहिए होता है. कई sessions whichever they sign up for, it's absolutely interesting, and they really want to learn that, but there are formalities now woven into the system, right?
और इससे इतना ऑब्सेशन है, मैं मतलब जहाँ देखती हूँ वहाँ पे ये टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात होती है. तो वन ऑफ द डेटा दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल आल्सो, that in the past, जब से ये टीचर ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन की बात हुई है, तो ये एक आशी का डेटा है फ्रॉम 2015-16 that over 17,000 plus colleges in India that teach just one single program, nearly 90% are teacher training institutes. तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले वाले एक्सर्प्ट में जो बात की गई है वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सर्प्ट है जो हमने निकाला है. क्यों? क्योंकि एनईपी की जब एनईपी में जब टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, वो खुद दे आर एक्नॉलेजिंग इन देयर वर्ड्स दैट इट हैज बीन बिलिगर्ड एंड रैम्पेंट विद करप्शन है, कमर्शियलाइजेशन है. उसमें आगे ये भी बताया है कि जस्टिस JS वर्मा कमीशन जो था 2012 का, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें मेजॉरिटी ऑफ दी स्टैंड अलोन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, over 10,000 in number, are not even attempting serious teacher education, but are essentially selling degrees for a price. Now, ये चीज ये खुद ये पॉलिसी डिसाइड कर रही है, ठीक है, या ये पॉलिसी इस बारे में बात कर रही है, बट एट द सेम टाइम उसका ऑब्सेशन फिर भी इस टीचर ट्रेनिंग से खत्म नहीं हो रहा है. ओके, इट इज सेइंग दैट अभी तक जो प्रोग्राम्स चलते थे, जो सिंगल प्रोग्राम इंस्टीट्यूट्स थे, उनको हटा के वी विल ट्राई टू रिप्लेस देम विद मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज. Now, again, as you all have only rightly pointed out, that there are some primary agendas of the market forces, of the consultants. It's becoming a big industry where they also want to make sure that teachers are apparently trained. But what are these teachers trained for? Are they trained for more empathy towards the child? Because that's not what we see really. We just see that these teachers are trained for, say, using computer more often, or say using some techniques, or just to talk about what are the current jobs in the market. Teachers are actually trained about this concept कि तुम जाके बच्चों को ये भी बताना कि नए मार्केट में जॉब्स क्या हैं, so that they can then start preparing them in the direction of that new job. Again, the future of jobs is absolutely boggling. But at the same time, is there where sorry, my internet connection is unstable. Can you all hear me properly? आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? Kaankshi, we are losing you. We are losing you. In and out. You're in and out. कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा मुझे? हाँ, Kaankshi, you're in and out. Just a minute. You have network. Is it better? Is it any? Yeah, now it's better. Better? Yeah, it is better now. Is it okay now? Yeah. Okay, I felt that. Okay, so that's where I was going to, come to our final thing. Now think of a pyramid. If you were to put children at the center of this also, teacher training के भी अगर बीचों बीच जो टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आप बच्चों को कैसे इसके बीच में ला सकते हो? We want you to think about this in a very how do I say, कि अभी तक गवर्नमेंट एजेंसीज ये सारे जो मेन Do you want to test now? Do you want to say hi? Hi. Yes, you're clearer now. Go ahead. No, I can. Well, if my voice is breaking, I'll pass it on to, because it's just the last exercise. Megha, you can take it over. Just have them do the last exercise. I'm okay. Okay, so same exercise है कि टीचर ट्रेनिंग एक दूसरा सिनारियो हम आपको दे रहे हैं कि अगर क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट टीचर ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है पूरे एजुकेशन करिकुलम बिल्डिंग का. सब कुछ एक नजरिए से देखा जाए तो लगता है कि उसी पर डिपेंडेंट है. तो आप अगर पिरामिड को दोबारा सोचें और अगर आपको सोचना हो कि
how do you put the child at the center of this? तो वो कैसा दिखेगा? Same exercise. So there is a question, Megha. Shreya is asking, do we have to answer this in terms of what the children would want to learn, or what would be beneficial for them if taught by the teachers? So आप इस तरीके से सोचिए श्रेया कि अगर इस समय टीचर ट्रेनिंग को completely डिसाइड किया जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि टीचर्स बेटर ट्रेन कैसे हो जाएं, ज्यादातर बच्चों को और कैसे पढ़ाएं, ड्रॉप आउट्स कैसे कम हो जाएं, बेसिकली वो एजेंडा रहता है. तो अगर आपको पिरामिड शिफ्ट करना हो तो आप कुछ सवाल क्या आंसर करना चाहेंगे कि आप उस पिरामिड में बच्चे को कहाँ रखेंगे कि वो डिसाइड कर पाए कि टीचर्स एक्चुअली कैसे पढ़ाने चाहिए, या वो डिसाइड कर पाए कि टीचर करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग्स एक्चुअली होनी भी चाहिए या नहीं चाहिए. करेक्ट. तो you can think of it from 2-3 perspectives, to be honest. You can think of it from what the child would want to learn. You can think of it from what is beneficial for them. You can also think of it from, should children have the final say in even deciding in terms of what is teacher training for that matter, right? एक child centered design, human centered design ये कहता है कि आप वो problem solve करेंगे जो problem किसी के लिए important है. So you can also think it from the perspective of that can we build a system where children actually take the first call in saying, should these trainings happen at all, right? And what should these trainings be accountable for? So I would say you can think of it from the two questions you've written. Both lenses are perfect lenses, but think even one step beyond that, right? If we are able to give children that capacity and that agency to decide. Right. Hi, I'm back. Can you all hear me? Yes. Okay. Okay. Thank you, Megha, for taking it over. I think you have, I completely lost the connection, but yeah. So I heard what you were saying, and I am hoping that all of these, participants are also thinking about it, that how, so we in the policy space, we have a lot of obsession. ठीक है, हमको obsession है ये teacher training से, फिर वो teacher pupil ratio से, उससे भी बड़ा obsession है. ये matrix जो है, third matrix है. जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, वो ये बात कहती है कि अरे उस सरकार के टाइम पे कम ड्रॉप आउट रेट था, इस सरकार के टाइम पे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, और ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है या ड्रॉप आउट रेट कम हो गया है. But again, there is a question, and there is an interesting question actually there, that you are enabling through reservation my entry into a system. You are enabling through reservation or through positive corrective mechanisms by testing my, by testing my ability through examinations. मैं एक बार college में तो पहुंच गई हूँ. Now, the question is that अगर मेरा drop out होता है या नहीं होता है, वो किस बात पे रियली डिपेंड करता है? वो टीचर की इनकम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है, वो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वो मुझे चॉइसेस नहीं देने पे डिपेंड करता है, या मैं वहां पे कितना एलिनेटेड फील कर रही हूँ उस कॉलेज कैंपस के अंदर कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने आई थी और मैं क्या कर रही हूँ, पर अब मैं डिग्री लेने आई थी तो डिग्री ले ही लेती हूँ. मैं I'm somebody who never leaves things in the middle. Okay, तो मेरा तो, मैं खुद इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, उसके बाद मैंने जाके सोशल साइंसेस भी पढ़ा, और ये इंजीनियरिंग का टाइम था, मुझे मालूम था कि मुझे अपनी डिग्री तो कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छे से भी पूरी करनी है. But do I really see a lot of value in the way I was treated as a student?
दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब यही सवाल है कि जब हम टीचर ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो मेरे टीचर में क्या होना चाहिए, ये टीचर्स किस ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ये बात बच्चों को भी तो मालूम होनी चाहिए। बच्चों को ये बता दिया जाता है आज तुम्हारी छुट्टी है क्योंकि तुम्हारी सारी टीचर्स एक ट्रेनिंग पे गई हुई है या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर ट्रेनिंग पे गई हुई है। दे आर ऑल्सो ब्लाइंडेड बाय इट कि यार ये टीचर्स की कोई पिकनिक है या यू नो हाउ आर दे, व्हाट आर दे लर्निंग इन दीज अपेरेंट सेमिनार्स। तो इसके इन मेट्रिक्स के साथ जो हमारा ऑब्सेशन है वो हमें कभी भी चाइल्ड एंड चिल्ड्रन फोकस या स्टूडेंट फोकस नहीं होने देता है। सो पीपल आर सेइंग हेलो या हेलो मैम मैम आंसर देने से पहले आप एक चीज मेरा क्लियर कर देंगी? हाँ बोलिए। मैम स्टूडेंट स्टडी करने जाते हैं तो उनका कुछ तो पर्पज होगा कि वो जॉब के लिए स्टडी करने जा रहे हैं या ज्यादा ज्ञान पाने के लिए। इसको आप क्लियर कर दिए, उसके हिसाब से मैं आंसर बताता हूँ तब। नहीं तो ये तो हमारे समाज, देखिए इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है अगर आप स्टूडेंट, देखो प्राइवेटाइजेशन का एक और क्या मुद्दा है जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। अभी जैसे बर्नी सैंडर्स भी जब यूएस की रेस में थे वो ये बात कर रहे थे कि यूएस में भी कैसे स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। अगर मैं कर्जा लेकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगी या मैं कहीं पे भी कर्जा लेकर पढ़ने जाऊंगी, मेरे को वो कर्जा चुकाने के माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, मतलब कि मैं जॉब फोकस्ड हो जाऊंगी या मेरी क्या प्लेसमेंट है मैं उस चीज पे फोकस्ड हो जाऊंगी। ओके मैम, क्लियर। तो मैम मेरा ये आंसर था इस पे कि टीचर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके आगे चल के वो स्टूडेंट क्या करते हैं। जैसे मतलब स्टूडेंट अभी स्टडी ले रहा है, आगे जाके कोई जॉब करेगा, तो टीचर्स को वो जो बच्चा आगे चल के जॉब करेगा उस जॉब कैसे जॉब में एंटर करेगा, कैसे जॉब करता है, उस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को अभी से उस चीज की नॉलेज दे कि आगे जाके वो लड़का जॉब कर सके, क्योंकि उसको आगे चल के जॉब करना ही है। तो ये ना उसको बताया जाए कि टीचर को कि आपको ये पढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना है, ये उसको आगे ट्रेनिंग दी जाए कि आगे चल के उसको जॉब करना है, तो उससे ऐसे बताया जाए कि आगे चल के जॉब के लिए तैयार हो जाए। Okay, thank you for that response. We'll come back to it. Thank you, ma'am. Definitely. Thank you, Satyam. अच्छा, बाकी लोग हैं अपना आंसर्स शेयर करना चाहते हैं तो we can quickly do that for next 10 minutes. We'll only discuss this and bring this session to a close. तो जितने भी लोग हैं कोई भी ये बात करना चाहते हैं कि how teacher training can also like bring children at the center of it. राजा हैं, राजा, शिल्पा। Hello. Yeah. Yes. About teacher training, शुरू से वही बात हो रही है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि assessment is should be first preference for NEP, because what happened, example मैं देना चाहती हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उन्होंने 10th क्लास के बोर्ड के लिए इमीडिएट एक्शन में एक साल डिक्लेयर कर दिया कि आपको ओरल मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं, and what happened is history, or after that they take back that decision and assessment में नहीं, इस साल अभी ओरल में मार्क्स मिलने वाले। So what is happening कि हमारी असेसमेंट की जो पॉलिसी है जो फिनलैंड ने चेंज की है कि उन्होंने असेसमेंट का स्ट्रक्चर बदल डाला। वो होमवर्क बच्चा कैसे देने वाला है वो खुद डिसाइड करता है, वो ऑडियो में देगा, वीडियो में देगा, टेक्स्ट में देगा या किसी आर्ट फॉर्म में देगा। तो मीन्स इंग्लिश का एग्जाम भी वो आर्ट फॉर्म में, डांस में भी दे सकता है। इट्स लाइक तो दैट इज वेयर चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा अगर हम उनके एम्पैथाइज करेंगे कि वो किस मोड में अपनी एग्जाम देना चाहता है या एसेस होना चाहता है कि कहाँ उसको। यस, तो आप बोल रहे हैं टीचर ट्रेनिंग में असेसमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है जो कि नेग्लेक्ट हो जाता है। सिर्फ उनको पेडागोजी कैसे पढ़ाना है वो बताया जाता है, लेकिन कितना भी हम ये सब कर ले, बात वही आती है कि आपका बच्चा सर्टिफिकेट पाने के लिए कैसे एग्जाम दे रहा है और वो कैसे आंसर कर रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच शिल्पा। Raja wants to. Yeah, I'll speak in Hindi because I think
My response is much more to what Satyam and the lady who just spoke. Instead of responding to other people, I would really like that you respond to our questions. कि अगर आपको teacher So the training response to your question is embedded in that, in the sense that हम लोग जब सब सोचते हैं education की, तो आगे चल के कहाँ job मिलेगी और क्या कमाएगा, इसके आगे नहीं जा पा रहे, ऐसे मुझे कोई impression आ गया अभी. So if you want to put the learner as the center, at the center of the pyramid or the focus, तो वो कहाँ job करता है, कैसे job करता है, is that the objective of education, to make some worker or an employee or somebody who is employable? तो education की objective क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़े और गौर से सोचेंगे तो शायद हमें एक अलग तरीके से जवाब मिलेगा कि are we trying to create responsible citizens, are we trying to create people who can integrate or assimilate into society, are we trying to create people who can be employed in future? तो हम क्या yeah, thank you for that. Thank you for that, Raja. I will quickly skip to another person. I think Liz is waiting to respond. Once she has responded, I will definitely come back to all your individual responses, and I think Megha will have something to say. Liz, आपको कुछ बोलना है? Understand the dreams and desire. Yeah. मैंने एक चीज जो आइडेंटिफाई किया है वो एक गैप है कि टीचर्स डोंट नो हाउ टू फैसिलिटेट लर्निंग. You know, they have become subject experts and they try to transfer knowledge. I think with the plethora of options that are lined in terms of job or whatever be the thing, teachers need to be given the training to facilitate the learning process where the child is allowed to engage in the learning himself. I think that's one aspect which is missing out. Right. I agree with Liz. It is constructivist learning theory which needs to be brought in. Okay, thank you, Raja. Again, thank you, because we are trying not to have a debate between you all. No, sorry, sir. I agreed. In fact, it's not. हम समझना चाह रहे हैं कि आप किस चीज को देखिए. एक इंसान का थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि शायद एजुकेशन के मतलब चाइल्ड का फ्यूचर इज एम्बेडेड इन हिज जॉब, या उसके जॉब से उसका एजुकेशन डिटरमाइन होता है. सो अभी वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट आई रियली हैव अ क्वेश्चन इन जनरल. जब आपने भी रिस्पॉन्ड किया और मतलब सबने रिस्पॉन्ड किया, हम फिर भी ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू वी लुक एट एज एजुकेशन. क्या हम एजुकेशन को ये मानते हैं कि एजुकेशन से जॉब मिलेगा, या एजुकेशन से बेटर ह्यूमन बीइंग बनेगा, या एजुकेशन से बेटर सिटीजन बनेगा, या एजुकेशन से उस बच्चे का कुछ भला होगा, उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन आएगा. अभी भी हम बोल रहे हैं वी. I think this we should be, the ball should completely be transferred in the court of the children and their parents at till certain age, and after a certain age only the child, right? क्योंकि अभी भी हम ये बोल रहे हैं कि जब ये इक्वेशन एक वी, एक एज ए सोसाइटी और एज एन एक्सटर्नल, आप और हम कौन है? आप और हम आइडिया डिजाइनर्स हैं, आप और हम पॉलिसी मेकर्स हैं, आप और हम इनोवेटर्स हैं. Or Megha, for example, she runs her own organization around defying the conventions around education. तो हम सब innovators हैं, पर अभी भी हम external हैं, हम उस system से बाहर आ गए हैं. I think the point of this conversation is कि हम जितना ball pass करने के बारे में सोचें towards the child, और system को ऐसा बनाएं कि वो उस child की आवाज सुन पाए. तो टीचर ट्रेनिंग के जैसे मुद्दे पे असेसमेंट की भी बात हुई, जॉब की भी बात हुई. लिज ने बोला कि फैसिलिटेशन नहीं है, आपने जैसे बोला कि व्हाट आर वी रियली ट्राइंग टू क्रिएट. सो ऑल दीज थिंग्स combined actually will determine what this could be. And I'm again not giving a solution, but I'm trying to say that there is no perfect answer to this, and every child will have its own customized individual needs. और जिसके लिए हमें अपने कान खोलने चालू करने पड़ेंगे. हमें मतलब all of us, including the सरकार, including the think tanks, everybody. So this was my bit on that, but I think I'll pass the mic again to Megha. I can't see her. Megha, hi. Yeah, thanks, Kaankshi. Thanks for that. So I think we're at 6:42. We are already running closer to close of the session. One thing I will say is that if you are thinking, the idea of Eduthon really is to
imagine solutions designed from the perspective of the learner. At least for us, it comes from that lens. And if you're able to really think, if you're, and all of your, I'm assuming participating in Eduthon, and I don't know if you've already gone through that process already of doing, you've gone through the design thinking workshop already. So अगर आप अगले 2 दिन में, 3-4 दिन में भी डिफरेंट एज ग्रुप के 5 बच्चों से बात करें और उनसे पूछें कि उनका एजुकेशन एक्सपीरियंस उनको कैसा चाहिए, तो शायद बहुत चीजें जो अभी हम कोट अनकोट डेलिबरेट कर रहे हैं वो शायद आपको एकदम क्लैरिटी से दिखने लग जाएंगी. सो चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर एजुकेशन सिस्टम कैसा दिख सकता है? चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर्ड, एजेंसी ड्रिवन सिस्टम कैसा दिख सकता है? वो उसके जगह जगह काफी एग्जाम्पल्स हैं, पर इस कॉन्टेक्स्ट में क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि एज एन इनोवेटर आपको अपने आप को उस हैंडीकैप के साथ रोक लेना चाहिए. सो एज एन इनोवेटर आई एनकरेज दैट अगर आप री इमेजिन कर सकते हैं तो वो री इमेजिनेशन लेवल पे वो सिस्टम क्या दिखेगा. और ये शायद अगर if you've not already done it, and I would say if you can speak to 5 kids, 5 बच्चे हर एज ग्रुप के, right? और अगर आप उनसे पूछें without the biases that you probably have on education yourself, क्योंकि हम भी अब बड़े हो चुके हैं, हम भी अब we come from an ageist perspective on learning also. I think आपको बहुत input मिलेगा on what can a reimagined child-centered learning system look like. And I think that in itself will give you some starting working models of how can you shift the power dynamics on education, right? तो ये जरूरी नहीं है कि हम सरकार गिरा देंगे और हम एजुकेशन मिनिस्ट्री गिरा देंगे और वहां से पॉलिसी चेंज होगी, पर ये जरूर पॉसिबल है कि इस समय का जो सिस्टम है उसमें आप ये पावर डायनामिक्स कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. हम ये डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग में बच्चे को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. हम कम्युनिटी लर्निंग, सोशल गैदरिंग लर्निंग में बच्चे को एट द सेंटर ऑफ इट कैसे बना सकते हैं, राइट? इसके लिए एक नजरिया ये भी बहुत जरूरी है कि क्या इस समय का सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है क्या वो फुलफिल कर रहा है वो मैंडेट जो एक बच्चा चाहता है. और ये आपको सिर्फ एक लर्नर बता पाएगा. I also encourage a lot of you to talk to people who dropped out of the system. Kaankshi mentioned I run a non-profit working in community-centered, choice-based learning system. And एक चीज जो हमारे learning centers पे काफी common है वो है dropouts जो आके एक्सेस करते हैं हमारी स्पेस को. और ऐसा नहीं है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस कम हैं. It's just that when you talk to them, you realize what is the system missing from the perspective of a learner's lens. So if you're able to do that, and if you can come back and give us some of those, we are also around as mentors. We can also then kind of help you determine what can these small innovations look like, right? So that's my one thing that I wanted to definitely say. Two is that there is Raja, you know this. I'll go back to what you said, which was that what is the end game? What is the end game, right? Is it a market-ready, skilled laborer? Is it individual in a society that helps a society to grow? Is it a good citizen? Any of these things have to be determined by the understanding of the participant herself, which is a learner, right? So those are two things I wanted to say to everybody right now. I know we are at 6:47 already. So yeah. So, yes.
That's from my end. Thank you so much, Megha, and thank you so much, Kaankshi, for this beautiful interactive session. And you brought up so many perspectives, and I hope it was very engaging and enlightening for all of our participants as well. So guys, अभी तक हम लोग ने बहुत सारे सेशंस कर लिए, लर्निंग फेज में भी बहुत सारे सेशंस कर लिए, उसके पहले भी बहुत सारे सेशंस कर लिए. This was our last session in Next Eduthon's learning phase, and we are really glad to have these two amazing ladies with us in this last session. So अभी हमें एक्शन करना है, अभी हमें एक्शन के ऊपर फोकस करना है, because we all are here for action, right? अभी थियोरी बहुत हो गई. So yesterday in our session, we have talked about, how to go ahead with problem scoping and all stuff. So I hope you all know that tomorrow is the last date to submit your problem statement, and whoever will not do that, we will eliminate them. So please do it by tomorrow. Me and Sharwari are there for all help, whatever you need. And like Megha said, you should talk to your stakeholders. If you are if your problem statement is focusing somewhere where your important stakeholder is children, then you should talk to children. If you are solving a problem for a teacher, then you should talk to few teachers, right? So अभी कल तक अपना problem statement submit करने के बाद I'll suggest कि ideation phase के पहले and prototyping के पहले you go and talk to few of your stakeholders and take their insights. With empathy mapping, it will help you a lot. And whatever questions you have for Megha and Kaankshi, they will be mentoring you, and we are going to announce their mentoring sessions for you all soon. So तभी आप आपके सारे questions उन्हें personally पूछ सकते हैं, and they will answer all of them. वहाँ पे कोई सब्जेक्ट मैटर की बाउंड्रीज नहीं होगी, तो मतलब वहाँ पे आप पेडागोजी पे भी पूछ सकते हैं, और चिल्ड्रन डेमोक्रेटिक्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हर चीज पे सवाल पूछ सकते हैं. तो उसमें पर ये जरूर होगा कि वट एवर द आइडिया दैट यू आर मेकिंग और लाइक द आइडिया दैट यू विल कम अप विद, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर आप रखेंगे तो आपको बेटर इनसाइट्स मिलेंगे. बट इफ यू जस्ट वांट टू चिट चैट आल्सो, देन आल्सो इट्स फाइन, राइट? No, don't say that. Otherwise, they will just come and chit chat. अभी हमें एक्शन पे ऊपर काम करना है, ओके? तो अभी एक्शन करना है, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करना है सबको. चलो, okay. Thank you so much for this amazing session. You can all be in touch with us, both me and Megha, and hope to see you around. Thank you so much, Megha, for this session. Bye, bye, Megha, bye, Kaankshi, and bye everyone. Yeah.